Hello students, I welcome you all to Political Science lecture, and this is in continuation of the first part of political communication. Today I am going to discuss with you types of political communication, and maybe that the types of political communication you may get in the short notes or long question also you can get in the exam. I will also try to cover the a few questions which you may get in the exams, though I am not sure about the nature of the questions which may be asked, but still few suggestions which I can give you and a format how the questions may come that I would try to help you out. So let us first try to understand the types of political communication which you are going to write in the first unit. If there is a question on that, discuss the different types of political communication. So what you are going to write is very important. So let us start with oral communication. The first type is oral communication. Oral communication is the exchange of information and ideas through spoken word. It can be directly in person, in a face-to-face interaction, or through an electronic device such as phone, video platform, or radio. The most effective way for businesses to transmit information verbally is through oral communication such as a staff meeting, webinar and workshop. अब अगर हम हिंदी में इसे देखते हैं तो मौखिक संचार बोले गए शब्द के माध्यम से सूचना और विचारों का आदान प्रदान है। ये सीधे आमने सामने की बातचीत में या फोन, वीडियो, अगर हम उदाहरण देखते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म या रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से हो सकता है। व्यवसायों के लिए जानकारी को मौखिक रूप से प्रसारित करने का सबसे प्रभावी तरीका मौखिक संचार के माध्यम से होता है, जैसे स्टाफ मीटिंग, वेबिनार और कार्यशाला। अभी हमने जैसे कोविड में देखा कि कितनी सारी जो चीजें हैं communication hai, we used to conduct through our Zoom meeting, the Google Meet. So how communication is important not only in our day-to-day life but also in the professional life, and how we can communicate. These are the ways through which we can do it. Now the second point is the written communication. They are these types of communication, they are very simple, but then when it comes in the exam we should know what are the types and how we are going to write the types and what are the examples which we are going to connect it with the types. Now written communication is any written message that two or more people exchange. Written communication is typically more formal but less efficient than oral communication. Examples of written communication include emails, text messages. लिखित संचार जो अब हम कहेंगे कोई भी लिखित संदेश है जिसका दो या अधिक लोग आदान प्रदान करते हैं। लिखित संचार आम तौर पर अधिक औपचारिक होता है लेकिन मौखिक संचार की तुलना में कम कुशल होता है। लिखित संचार के उदाहरणों में शामिल है ईमेल, मूल संदेश इत्यादि। अब हम देखेंगे तीसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे हम औपचारिक संचार भी कहते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज it is an exchange of official information between people within the same organization who are often at different levels within the organizational hierarchy. It could be within the departments also, one department to another department, but basically it is the formal idea. औपचारिक संचार एक ही संगठन के भीतर लोगों के बीच आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान है जो अक्सर संगठनात्मक पदानुक्रम के भीतर विभिन्न स्तरों पर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बेसिकली जो कम्युनिकेशन का जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये मैनेजमेंट में भी स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद एंड बिजनेसेस आल्सो वी आर डीलिंग विद. इट इज समथिंग व्हिच इज इन जनरल, but since it is political communication, so we think that it is basically the discipline of political science, but that is not the reality. We need to connect it with other organizational part, other management perspective and a business perspective also. Then the fourth one is informal communication. Informal अनौपचारिक संचार. Informal communication refers to the communication that flows without following the formal defined path. An informal communication system is also known as grapevine. Under informal communication, a piece of information flows in all directions without paying any
heed to the level of authority or you can say authority. अनौपचारिक संचार उस संचार को संदर्भित करता है जो औपचारिक रूप से परिभाषित पथ का अनुसरण किए बिना प्रभावित होता है। एक अनौपचारिक संचार प्रणाली को अंगूर की बेल के रूप में भी जाना जाता है। अनौपचारिक संचार के तहत सूचना का एक टुकड़ा सभी दिशाओं में स्तर या प्राधिकरण पर ध्यान दिए बिना प्रभावित होता है। The thing is, we need to understand that in the formal communication, there is a hierarchy which is followed, there is a pattern which is followed, there is a rule which is followed, because all of us know that how formalism works. Now, when we are talking about informal communication, informal channel of communication, informal pattern of communication, here it means that we are not giving importance to the authorities which is involved, to the strict rules. जो रूल है उसको बाउंड हम नहीं है, तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है, और बहुत हद तक ये ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस नहीं है। इन बातों को हमें यहाँ पे समझना होता है। Then fifth point is upward communication. Upward communication is the process by which lower level company employees can directly communicate with upper management to provide feedback, complaints or suggestions regarding the day-to-day operations of the company. Upward communication. ठीक है, जब हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जब हम जो कम्युनिकेशन है वो ऊपर बैठे लोग जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि समथिंग विच इज फ्रॉम बिलो विच इज मूविंग टूवर्ड्स अपवर्ड। सो हियर यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निचले स्तर के कंपनी कर्मचारी कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन के बारे में प्रतिक्रिया, शिकायत, सुझाव देने के लिए सीधे ऊपरी प्रबंधन के साथ संवाद किया जाता है। क्योंकि जो भी सबॉर्डिनेट और जो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स है उसके आधार पर ये काम करता है, जो नीचे लेवल पे लोग हैं और जो ऊपर लेवल के लोग हैं। तो नीचे लेवल पे जिस तरह की चीजें काम हो रही हैं, जिस तरह का इश्यूज आ रहा है, ग्रीवांसेस आ रहा है या फीडबैक आ रहे हैं, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, लेके जाते हैं, इसलिए हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कह रहे हैं। अब सिक्स्थ पॉइंट इज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसका यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। Downward communication is a type of communication where key messages flow from upper management, upper managemental authority down to the lower level employees. In many, you can say, iterations of downward business communication, a message begins with C-level executives, including but not limited to the CEO. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक प्रकार का संचार है जहां मुख्य संदेश ऊपरी प्रबंधन से निचले स्तर के कर्मचारियों तक प्रभावित होते हैं। डाउनवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन के कई पुनरावृत्तियों में सी लेवल के अधिकारियों के साथ एक संदेश शुरू होता है जिसमें सीईओ शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। द थिंग इज कि जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से लेकर के नीचे तक की ओर फ्लो करता होता है। तो ये बहुत ज्यादा डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन है, कुछ हद तक हम इसको जो है एक मान सकते हैं कि सी लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ ही हमारा मतलब बातचीत हो रही है। बिजनेसेस messages, it starts with this C-level executives. So the thing is कि upward communication, downward communication, both the communication models, they are interconnected. We need to understand. And the thing is that the downward communication model, it could be more democratic, okay, where जहाँ पे जो messages हैं अपर मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज तक फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ हद तक इसे हम डेमोक्रेटिक तरीके से भी समझ सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे ऊपर से लेकर के ऊपर लेवल पे एम्प्लॉइज जो बैठे हैं उनके थ्रू जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेट हो रहा है। नाउ द सेवेंथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल इज across communication, though it's not written there, you can also write the across communication. हिंदी में इसे हम कहते हैं समस्तरीय संचार, जो विदिन द डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में होता है। तो ये जो इंटर या क्रॉस, जैसे हम कह सकते हैं क्रॉस कल्चरल या क्रॉस सेक्शनल जो कम्युनिकेशन है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरी फेयोल ने, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका पेपर है आपने पढ़ा होगा, तो हेनरी फेयोल ने इसमें ये जो अक्रॉस कम्युनिकेशन का जो पूरा ये डिस्कशन है, उस जो पूरे आइडिया को है हेनरी फेयोल ट्राइज टू
bring out that further argument, और इन्होंने इस जो पूरे क्रॉस कल्चरल और अक्रॉस कम्युनिकेशन है, इस पूरे आइडिया को इन्होंने ही प्रचार प्रसार किया है और बताया है इन्होंने। तो इन्होंने अक्रॉस कम्युनिकेशन इसलिए भी बताया कि अक्रॉस कम्युनिकेशन जब हम एक डिपार्टमेंट से इंटर डिपार्टमेंट्स में हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, तो बेसिकली जो है एक तरीके से एक कॉर्डियल रिलेशन या कंसिलिएशन हो जाता है। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट्स है या कोई ग्रीवांसेस है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है काम को लेके या सोशल बिहेवियर को लेके, तो वो चीज़ें जो है रेक्टिफाई हो जाती हैं और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है, उसमें से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मॉडल बेटर है और क्यों। इस बात को भी हमें अपने आंसर में लिखने की जरूरत है कि जैसे हमने शुरुआत से पढ़ा, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन and across communication. Now, how do we find these communication models to, you can say, facilitate the idea of political participation? Because the whole idea of political communication is political participation. We need to understand that. So, if it is facilitating that political participation, so we need to write it in the positive context, and if it is not doing so, you also need to bring out or highlight why it is not doing that thing. So why it is not leading to that, why it is not able to ensure political participation, what is the problem there. So that area you have to identify. I think in the first video series which I started for this skill enhancement paper, political communication and leadership, uh, for the first unit, I talked about the Kaldish model and how the whole syllabus flows, which part is more important, and I explained and connected the idea of political system David Easton with Kaldish, so that you please refer to for the first unit. And this today's video is in continuation within that first unit only. So you have to read the types of political communication, and then the recent second video which I had just brought, so that was related to the leadership and theories of leadership, but I had explained only the two theories, and I told you that I will be doing the later part very soon. So I got so many messages, so many comments regarding that ma'am, please try to upload it as soon as possible. So we want to go through it, or we want to study it. Maybe exams are coming very near. So I'll obviously try to do it, though I'm stuck up with so many exercises. I'll obviously try to continue the series, which would be in the best interest of you. Okay, so you stay connected and try to go through the whole PPT of this types of political communication. Try to connect it with the Kaldiush model or the political communication as a whole, and which type of political communication is much more, you can say, important for political participation, and it is going to facilitate, you can say, the whole idea of democratic consolidation in the long run. So that part also we need to understand. So okay, then keep in touch and give your comments to me. Stay blessed, stay connected. Thank you.